इस कोर्स में हम असेंबली लैंग्वेज सीख रहे हैं और कुछ दिनों से हमने जो कवर किया है उसमें बाइनरी नंबर्स और इसी तरीके से some basic knowledge about the assembly language जो कि इस गाइड में अवेलेबल है। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो की थी और एक जो है वो हेलो वर्ड इसकी कोडिंग सीखी थी, इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके देखी थी और कुछ एरर एंड ट्रायल से हमने एक दो एरर्स भी जो है वो प्रोग्राम में रिमूव करके देखे थे। और चूँकि हम ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और इसी तरीके से जो सेटअप है उसमें भी हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, आईडीई यूज़ कर रहे हैं जो कि SASM के नाम से है। लिहाजा हम अगर चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सेटअप ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और आज का टॉपिक हम जो है वो मेमोरी सेगमेंट से शुरू करेंगे। इस गाइड को हम फॉलो कर रहे हैं अपने इस सब्जेक्ट में। ओके, सो so today we talk about the memory segments. So the memory inside the computer, we are talking about the main memory. So in main memory, we have different segments, and these segments are named as the data segment. Similarly, we have a code segment. And similarly, we have a stack segment. So memory is divided into a number of segments. And these segments contain respective binary information inside. So an extra segment. So memory for a program is divided into a number of segments in which the different parts of the program exist inside different parts of the program. Okay, so a program is divided into multiple segments, and these segments are used while the execution of the program. So now we read from this guide what is written inside. So we have discussed the three sections of the assembly language program. इसमें के एक हमें नजर आ रहा है सामने txt, similarly
similarly .bss dot data. So these are the three segments, three sections. Interestingly, if you replace the section keyword with segment, you will get the same result. Try the following code. So section primarily corresponds to a segment in the memory. ये वही हेलो वर्ड प्रोग्राम है। अगर आप देखें कि यहाँ पे जो सेक्शन कीवर्ड है उसको रिप्लेस करके जो है वो सेगमेंट कीवर्ड जो है वो यूज किया गया है। The result will be the same. So that means a assembly language program is primarily using segments in memory, which are primarily the sections. When the above code is compiled and executed, it produces the following results. इसको हम देख लेते हैं एक दफा क्या वाकई ऐसा होता है। इसके लिए हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं हम उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वहाँ पे यही प्रोग्राम जो है ये हमारे पास मौजूद है जो हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। और अगर हम इस सेक्शन को सेगमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, this section is replaced with a segment. We execute this program. And it will produce the same result by replacing the section with the segment. It will produce the same result. So we have seen that a section is primarily a segment, and these segments. So program code is divided into different segments according to their properties. So now we talk about the memory segments. A segmented memory model divides the system memory into group of independent segments referred by the pointers or the address located in the segment registers. So this is these segments are group of independent segments referenced by the pointers located in the segment registers. Each segment is used to contain a specific type of data. One segment is used to contain the instructions. This हमने code segment कहा. Another segment store the data segment. इसको हमने data segment कहा था. Third segment keeps the program stack. इसको हमने जो है वो stack segment कहा था. In the light of the above discussion, we can specify various memory segments as so data segment is a segment which represents by dot data section in the dot bss section in the assembly language program. The data section is used to declare the memory region where data elements are stored for the program. So for data we use the data section. This section cannot be expanded after the data elements are declared. So once we define all the the data elements, it remains the part of the memory. The BSSS section is also static section that contains buffers for data to be declared later in the program. Remember, here data section is for the constant values, whereas the .bss section for the variables. They are both are the data items, but the type is different. So this memory is zero filled. The buffer memory is zero filled
assigned are changed during the execution of the program. The code segment is represented by the .txt or the section where we write the code. This defines the area of memory that stores the instruction code. Stack is this memory contains data values passed to functions and procedures within the program. Now we are moving towards the assembly registers, which is an important information because the registers specifies the architecture of a microprocessor, and this knowledge primarily is very important when we need to write the assembly language programs. So we read this information that processor operations mostly involve the processing of data. And we know that this data is primarily in the form of binary data. Okay, this data can be stored in memory and accessed from their own. However, reading data from memory and storing data into memory slows down the processing, as it involves complicated processes of sending the data request across the control bus and into the memory and getting the data through the same channel. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है? कैसे हैं सर आप? जी सर, आवाज आ रही है। मैं कल कहाँ गायब थे? सर एमएनएम क्लास में सर। नजर तो नहीं आए क्लास में कल। जी सर, एमएनएम क्लास में था सर मैं कल। हाँ, तो दूसरी क्लास में नहीं था करियर। अच्छा अच्छा सर, इसी क्लास से दरअसल आपको पता है से नेटवर्क इशू होता है, और सर कल से ट्रांसफार्मर का भी इशू है, लाइट ही नहीं। अभी भी सर लाइट नहीं आई हमारी। अच्छी बात नहीं है। बहरहाल वीडियोस रिकॉर्ड करती है, ऐसी सूरत में आप एक मैसेज कर दिया करें। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं कर रहा यही कि लाइट नहीं थी, तो इसलिए सर वो कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। काफी बार ट्राई तो किया था मैंने डीसी क्लास में, अभी भी बस सर ऐसे ही चल रहा है नेट। कोई बात नहीं, आप फिर ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है, आज जैसे ही ये अवेलेबल हो जाए जिस वीडियो चेक की थी, और इंशाल्लाह आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मामला भी सेट हो जाएगा। Okay, we talk about the registers this section, and it says that because there is a difference microprocessor में और memory में, there are many things. Processor has to access the memory and then read data, and then after processing, the microprocessor has to write the results back. So if microprocessor has no memory, then it is very difficult to implement the process for the data. So that's why microprocessor contains a small memory inside, and this memory is used to temporarily hold the data and also process the data and keep the results inside the microprocessor. It's a very small memory inside the microprocessor, and this is required so that the operations are performed at the speed of microprocessor.
as we know that the microprocessor speed is very high. So processing speed is very high in the gigahertz range. तो जो इसका क्लॉक है उससे हम माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड को आमतौर पर मेजर करते हैं. Whereas the same is not true for the motherboard or the memory, the main memory, जो स्पीड में इससे कम होती है और जब हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो इसमें कुछ टाइम लैप्स होगा. So to avoid this time lapse, this small memory inside microprocessor is used, and data is read from the memory. Memory से जो डेटा है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कॉपी किया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद इसका रिजल्ट जो है वो मेमोरी में दोबारा सेव किया जाता है. So by doing this, the microprocessor achieve considerable higher speed to execute programs. So to speed up the microprocessor operation, इसी को यहाँ थोड़ा इस अंदाज में लिखा है. To speed up the microprocessor operation, the processor includes some internal memory storage which are called registers. This is also known as the internal architecture of the microprocessor. So the knowledge of registers is very important in writing the assembly language programs. So, but surprisingly, these registers are not more than 20 or जो programmable में use होते हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है. And we have जब हम assembly में program करते हैं, we have a ready reference ready with us, जिसमें कि ये डिटेल जो है वो लिखी होती है और उसको हम फिर यूज करते हैं. So there are 10 32-bit and 16-bit processor registers. In instruction architecture, 32IA is for instruction architecture. या autonomous architecture, instruction architecture. The processor is built according to the instructions. So अगर हम प्रोसेसर को इलेक्ट्रॉनिकली देखें या इलेक्ट्रिकली इसका मुजाहरा करें, so processor microprocessor consists of large number of circuits. So a large number of और हम इनको अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि these are the digital logic circuits, and they are used to hold the data, they are used to process the data, and they are used to finally when the result is generated, they can be used to send the data towards the memory. So a number of things microprocessor has to do. So for this, there are these total of 16 registers are available, in which 10 registers are 32-bit and 6 registers are 16-bit registers. So these registers are grouped into 3 categories: general purpose registers, जिनका जो values है वो आसानी से change की जा सकती हैं, control registers and segment registers. जो control registers हैं ये हमें प्रोग्राम का स्टेटस बताएंगे और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है उसका स्टेट बताएंगे. Similarly, the segment registers, इसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आ चुके हैं. The general registers are further divided into the group of data registers, pointers, and index registers. सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. आपको आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर. वो बीच में दोबारा वो मिसकनेक्ट हो गया था, ज्वाइन किया. Now, as we already know that the data is in binary. So whenever there is word data comes, it means we are talking about the binary data. So pointers are the registers which used to hold the addresses,
address of memory. Similarly, the index registers are also used for the same purpose to primarily index or the address of particular memory space. जैसा कि आप जानते हैं कि किताबों में आमतौर पर पॉइंटर्स रखे जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ तक हम रीड कर चुके हैं। और इसी तरीके से इंडेक्स जो है वो एक हर अच्छी किताब का एक इंडेक्स होता है जहाँ से हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है वो आसानी से जा सकते हैं। यानी एक लिस्ट होती है जिसमें एड्रेसेस जो है वो सेव होते हैं कि किस जगह पे डेटा जो है मौजूद है। कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं, कुछ चीज़ें लॉजिकल नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक एनोलॉजी डेवलप की है जब जो भी चीज़ डेवलप होती है ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल अंदाज में जो है इवॉल्व करे। So first of all, we talk about the data registers. These are 32-bit registers, and their purpose is used for mathematical operations, arithmetic and logical, and other operations including shift, rotate, and there are also many operations. So these 32-bit registers can be used in the following three ways. So a complete 32-bit register can be used like EAX, कल हम पढ़ रहे थे ये EAX, EBX, ECX और EDX की टर्मिनोलॉजी किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। दिस इज अ 32-बिट रजिस्टर, और अगर हम इसको 16-बिट रजिस्टर में यूज करना चाहें देन वी हैव टू जस्ट ड्रॉप द ई। अगर EAX का ई ड्रॉप कर देंगे, ई को हटा देंगे, तो जो AX बनेगा दैट इज प्राइमरली 16-बिट रजिस्टर। सिमिलरली BX, CX एंड DX और 16-बिट रजिस्टर जो है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द 8-बिट रजिस्टर्स जिसमें हाई बाइट और लो बाइट का जिक्र होगा। सो H स्टैंड फॉर द हाई बाइट and L stand for the low byte. So similarly, we can use these registers in the program in writing an assembly language program, whereas the appropriate address related to a register can be used. अगर 32-बिट का रजिस्टर यूज करना है तो EAX या EBX और ECX के सूरत में यूज करेंगे, और अगर स्मॉलर रजिस्टर यूज करना है तो सूरत में appropriate जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूज करेंगे 16-बिट के लिए और 8-बिट के लिए। इसको एक डायग्राम की मदद से भी बताया है। यही डायग्राम हमने भी इसी से मिलती जुलती डायग्राम बनाई थी, इसमें जो है वो 32-बिट रजिस्टर्स यानी पूरा जो रजिस्टर है, अगर सिर्फ रजिस्टर ए की बात करें तो ये ए रजिस्टर है। तो जो ए डेटा रजिस्टर जो है इसके आगे देखें तो किस तरीके से अगर फुल एक्सेस करना है तो EAX से एक्सेस करेंगे, लेकिन अगर इसको 16-बिट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस करना है तो फिर AX से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब AX से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम ये वाला पोर्शन जो है ये यूज कर सकेंगे कंप्लीट। और इसके बाद जो है अगर हम इसको 8-बिट रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहेंगे तो EH और EL से एक्सेस कर सकेंगे। ये वाला पार्ट जो व्हाइट नजर आ रहा है आपको, इसको आइसोलेट यानी अलग से एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरे का हिस्सा है, यानी EAX का हिस्सा है। If there is any question आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट मौजूद हैं वो प्राइमरली पूछ भी सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ दीज डेटा registers are have specific use in arithmetic operations। जब हम arithmetic operations करते हैं तो उसमें इनका यूज जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, खासतौर पर जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं और ऐसे ऑपरेशन जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं।
उनके लिए जो है उनके खास तौर पे हमें जो है वो देखना पड़ता है कि कौन सा रजिस्टर अप्रोप्रिएट है यूज करने के लिए। यहाँ पे AX रजिस्टर इज द प्राइमरी कॉम्पोनेंट रजिस्टर। इनिशियली जब ये डिजाइन किया गया था तो AX is one of the register which is used most frequently and almost involved in all operations. For example, input and output operations and most arithmetic instructions. उसके बाद इसको जब रियलाइज किया गया कि इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो चीज़ ज़्यादा यूज होती है उसकी लाइफ जो है वो in terms of chemical decomposition और यूजेज यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में इसकी लाइफ इफेक्ट होती है, तो फिर इसको जनरल पर्पस रजिस्टर के तौर पे जो है एसएस तक कन्वर्ट करती है। देन द BX रजिस्टर इज यूज्ड, अगर इसका नाम बेस रजिस्टर है, सो बेस मीन किसी भी चीज़ की जो बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी एक बेस होती है, प्लेस्ड ऑन ए बेस। कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन कंप्यूटर में या लॉजिक में फर्क ये होता है कि बेस इज यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द मेमोरी, क्योंकि बेस आमतौर पर ये मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन है। स्टैक जब पढ़ेंगे, स्टैक के जो टॉप की बात करेंगे, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ में आएंगी। अभी हम यही कह सकते हैं कि बेस इज प्राइमरी द स्टार्टिंग एड्रेस, starting address of data, starting address of so CX is known as the count register. So the loops, for example, इसमें 0, 1, 2, 3 और increment और decrement operations होते हैं, it is used inside the loop operation, जैसे for loop होता है C language में। So DX is known as the data register, so usually used to contain the data for different operations. For example, multiplication and divide operations, because these are the operations which involve more than one operations inside. अगर चीज को याद रखना इतना आसान नहीं है, but if you have the ready reference with you, तो आप इसको आसानी के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं। Then there are pointer registers. Pointer registers are primarily the registers as instruction pointer register, stack pointer, and base pointer registers. These registers are, because they are written as a pointer register, they are used to hold the address of the इसमें जो instruction pointer है इसकी बात करेंगे, it's a 16-bit register. Short instruction IP instruction pointer register store the offset address of the next instruction to be executed. So IP is associated with the code segment register. CS stands for the code segment. जो अभी हम पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, and it is written in this form CS:IP. So CS contains yes, एक example लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 hexadecimal, and similarly semicolon, and the offset address is, let's say, 0, 1, 0, 0. So this way the address is specified on paper, and computer primarily use it in a binary format along with the different circuits जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। हम इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। Okay, then stack pointer. The stack pointer is a 16-bit register, written as SP, जिसका short form में SP लिखते हैं, and it provides the offset value within the program stack. So this can be written in the same format, but the stack segment is used. So stack segment is used.
The purpose of stack segment is to hold the data temporarily, which is useful for many operations. Similarly, we have a base pointer. The base pointer mainly help in referencing the parameter variables passing to a subroutine. Functions लिखते हैं C language में, तो functions को assembly language में subroutine कहते हैं. So whenever subroutine takes a parameter, that parameter variable is primarily held in the PS. So the address in stack segment register is combined with the offset in base pointer to get the location of the time. So base pointer can also be combined with the destination and the source index as base registers for special addressing. So DI stand for the destination. And S stand for the source. So sometimes we have to copy the data from source to destination. So that is a typical case in which we move data from one place to another place inside the memory. So these registers are designed to do that. इसी तरीके से रजिस्टर के और भी पर्पसेस हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है वो इन तमाम रजिस्टर्स को मोस्टली जनरल पर्पस जो है रजिस्टर के तौर पे भी यूज करते हैं. तो बिकॉज दीस रजिस्टर्स आर accessible through general purpose programming, so they can be used in different applications as well. So this is the 32-bit format for the pointer registers. जिसको दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं. एक एज ए 16-bit रजिस्टर, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट दिस इज ए 16-bit 0 से 15 तक. Similarly, we have the 32-bit pointer register as well in a 32-bit architecture. Now moving towards the index register, जिसमें अभी हम source index और destination index register की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी डिटेल आ गई है. So in index registers, these are 32-bit registers ESI and EMI, and their 16-bit rightmost portions. They are used to index addressing and sometimes used in addition and subtraction. So source index is used for string operations. Destination index is used for destination index for string operations. So mostly their purpose is used with bind with the string operations. ये पीछे इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर डायग्राम में वैसे ही इंडेक्स रजिस्टर्स की भी एक डायग्राम बना के बताया गया है किस तरीके से 16-bit version and the 32-bit versions can be used. Okay, now we take a break of about 10 minutes, and after 10 minutes we start the control registers part. ये मुबशर अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.